Hi friends, on continuation of chapter number 5, surface chemistry. In this session we'll start with mechanism of adsorption. So first of all, hope आप लोगों ने last session अच्छे से check कर लिया है what actually means by adsorption, what actually means by absorption, adsorbent, adsorbate, desorption and sorption. ये सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थे, वो आपने शायद देख लिए हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं. So the first part, mechanism of adsorption. So the surface particle of this adsorbent are not in a same environment as the particle inside the bulk. यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, the surface particles means once again आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए rusting of iron वाला एग्जाम्पल. So the surface particle of a adsorbent are not in the same environment as the particle inside the bulk. Means foreign species जो भी होगी वो and जो bulk में होगी वो दोनों के दोनों different environment होंगे. Inside the adsorbent all the forces are mutually balanced, but at the surface there are always some unbalanced or residual forces are there. बल्क के अंदर क्या है, बल्क के अंदर ऑल द लिक्विड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बल्क, बट ऑन सरफेस के ऊपर ऐसा नहीं होगा. कोरोजन होगा तो जनरली आप देखोगे तो कॉर्नर पार्ट पे होगा, या फिर जो छोटे छोटे नेल्स है वहां पे आपने, या फिर जहां पे वेल्डिंग किया हुआ है वो पार्ट पे होगा, या फिर जहां से बैंड है वहां से कोरोजन होगा. कोरोजन कभी भी यूनिफॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा, पहले कॉर्नर से स्टार्ट होगा एंड देन इट्स ग्रेजुअली स्प्रेड. While in case absorption के अंदर जो होगा वो बल्क फिनोमिनन है. All the water molecules are equally spread into the main solid phenomenon. So final, these forces are adsorbent are responsible for the adsorption. Fine. नेक्स्ट दैट इज एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन. एंथैल्पी जब भी वर्ड आता है सीधा हमें याद आना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी, एंड उसका मैकेनिज्म डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि सर ये एडसॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो सर कैसे पता चलेगा. तो हमने डिस्कशन किया था डेल्टा जी लेस देन जीरो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस. Delta G greater than 0, rate of backward reaction takes place, and if delta G is equal to 0, system is in an equilibrium. So let's start with heat of adsorption. Adsorption is an exothermic process. Now what actually means by exothermic process? Standard 11 chapter 6 thermodynamics. During this reaction heat is evolved from a system that is called exothermic process. So basically adsorption is an exothermic process, that is some heat is always evolved during this adsorption. याद आ गया आपको? Okay. The amount of heat evolved when 1 mole of an adsorbate is adsorbed on the surface of absorbent is called heat of adsorption. One marker question, what actually means by heat of adsorption? So once again we start with the amount of heat evolved when 1 mole of an adsorbate is adsorbed on the surface of absorbent is called heat of adsorption. So what actually means by heat of adsorption यहाँ पे पता चल गया. Next is thermodynamical aspect. वही हमारा गिब्स फ्री इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Adsorption is an exothermic process. When a gas is adsorbed, the degree of freedom, now degree of freedom का मतलब क्या होगा, delta G of its molecule decreases and hence the entropy decreases, that is delta S becomes negative. Adsorption is thus accompanied by a decrease in enthalpy as well as the decrease in entropy of a system. अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो बाय एनी मीन्स डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. अब डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, तो दो केसेस बन सकते हैं. इफ वी हैव अ वेरी स्मॉल डेल्टा एच, वंस अगेन इफ वी हैव अ वेरी स्मॉल डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी ज्यादा ले लो, मीन्स बड़ी ले लो. When you multiply with temperature, this second term becomes more negative. जैसे हमने यहाँ पे बताया डेल्टा एस becomes negative.
So small value of delta H minus larger value of T delta S multiplication part, delta G becomes negative. That is your first assumptions. Second assumptions, you take delta H itself as a negative. So anything is negative, you minus something, overall value becomes negative. So these are the two cases where first case delta S value is larger and due to this T delta S becomes more negative. So overall delta G is negative. If delta G is less than 0, rate of forward reactions takes place. Second assumptions, delta H itself negative. So if initial delta H is negative minus T delta is also negative, the overall delta G becomes negative. So in the thermodynamics of adsorption, it clearly written that delta G must be negative. By any means delta G must be negative. On the basis of equation delta G is equal to delta H minus T delta S, delta G can negative if delta H is greater than T delta S. मैंने पहले ही बताया delta H की वैल्यू छोटी ले लीजिए and T delta S की वैल्यू बड़ी हो जाए. तो T delta S की वैल्यू कब बड़ी हो सकती है? If you have delta S larger. नाउ सर ये सब आप बोल रहे हो, सबसे पहले टर्म डिफाइन करते हैं. बहुत सारे लोगों का शायद 11th बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, तो सबसे पहले डेल्टा जी इज नथिंग बट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज G2 minus G1. Delta H is change in enthalpy, that is H2 minus H1. T absolute temperature and delta S means change in entropy. S is nothing but entropy. What is the definition of entropy? Measurement of randomness. Measurement of randomness is known as entropy. If randomness, आप सभी को पता है सरफेस के ऊपर ऐसा है कि किसी एक ही पार्ट के ऊपर सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल होंगे. इट्स अ रैंडम प्रोसेस. सरफेस के कोई भी पार्ट के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइजनस गैस स्टक हो सकता है. So delta S is always really very high in case of gaseous particle, and that's why if delta S is large, when we multiply with the temperature, then second terms becomes more negative as compared to this delta H. So on the basis of equation delta G is equal to delta H minus T delta S, delta G negative in the case of if delta H is greater than T delta S. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and the less negative, ultimately delta H equal to T delta S and delta G becomes 0. At that stage is known as equilibrium. तो second part बताया आपको equilibrium कब establishment होगा. First part delta H and T delta S दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तब जाके वो डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा. एट द 0 पार्ट delta G becomes 0, means system is in an equilibrium. So this is all about your thermodynamics of adsorption. उसके बाद हमें types of adsorption पढ़ना है. There are two types of adsorption. One is physical adsorption and second is chemical adsorption. Physical adsorption को physisorption भी बोला जाता है and chemical adsorption को chemisorption भी बोला जाता है. बोर्ड में एक या दो बार पूछा हुआ 2 मार्कर क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉप्शन एंड केमिसॉप्शन. 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको. फाइन, एंड यू गेट 2 मार्क्स. स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. गिव द डिफरेंस और व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय फिजिसॉप्शन एंड केमिसॉप्शन, और गिव द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉप्शन एंड केमिसॉप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन. As I already told you, there are two types of adsorption. That is, one is physical adsorption and chemical adsorption. Let's start. Depending on the force of attraction between adsorbent and adsorbents, the adsorption is two types. One is physical adsorption, another is chemical adsorption. Physical adsorption is known as physisorption, and chemical adsorption is known as chemisorption. So now physical adsorption or physisorption, name itself suggests all the physical forces are involved in such kind of adsorption, like London force, van der Waals force, intermolecular ionic force and many more. Opposite to that, what actually means by chemical adsorption or chemisorption? Name itself suggests all the chemical bonds are involved in it. Covalent, coordination covalent, metallic bond and basic covalent bond, and this is all about your chemical adsorption. So this is physical and chemical difference. बहुत ही name itself suggests weak van der Waals force है, तो जहाँ पे force of attraction बहुत कम है वहाँ पे energy of activation कम चाहिए.
तो energy of activation in case of physical adsorption is really very less, while in case in chemical adsorption, physical adsorption के अंदर energy of activation कम चाहिए. Physical adsorption किसकी वजह से होता है? Van der Waals force. Van der Waals force is a weak force. London force weak force. तो EA energy of activation बहुत कम चाहिए. But in case of chemisorption और chemical adsorption, it's a chemical phenomenon. तो energy of activation बहुत ही ज़्यादा चाहिए. तो कुछ पॉइंट डिस्कशन करने हैं फिजिसॉप्शन एंड केमिसॉप्शन, एंड देन धीरे धीरे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. लास्ट में डिफरेंस देखना है. दैट डिफरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद if the force of attraction between the adsorbent and adsorbate is weak van der Waals force, it is called physical adsorption or physisorption. For the physisorption, the heat absorbed is low and it is not specific since the van der Waals force are universal. Means van der Waals force are physical force which cannot measurable. That any substance can form a van der Waals force with any surfaces. Perfect. Opposite to that, what actually means by chemisorption? The force of attraction between the adsorbent and adsorbate is chemical bond. It is also called activated adsorption since it involves some activation energy. For chemisorption, the enthalpy of adsorption is high and it takes place at the higher temperature. It is highly specific in nature and it will occur only if there is some possibility of chemical bond between adsorbent and adsorbates. So basically in physical adsorption, physical force like van der Waals force is there, while in case of chemical adsorption, only chemical bond or chemical reactions are takes place. Second point, second paragraph. A physisorption at low temperature may be possesses. अब physisorption क्या है? वीक van der Waals force है. अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा होगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक है वो टूट जाएगा. सिंपल लॉजिक. बट केमिकल बॉन्ड तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही बनेगा. तो बेसिकली केमिसॉर्प्शंस रिक्वायर्ड अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाइल फिजिकल एडसॉर्प्शन कब होगा? जब लो टेम्परेचर हो. तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, फिजिकल एडसॉर्प्शन जीरो हो जाएगा और नलिफाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस इज फर्स्ट एब्सॉर्ब ऑन निकल बाय द van der Waals force. But at high temperature, the molecule of H2 dissociate and form H and H atom, and they are absorbed on a surface of nickel by chemical bond. ये निकल वाला एग्जाम्पल क्यों कोट किया है? जस्ट बिकॉज आपको 11th में भी पढ़ाया गया था, 12th में भी आपने पढ़ा. सिंपल हाइड्रोजिनेशन H2 PT PD Ni. किसी भी अल्किन या अल्काइन के अंदर H2 मोलिक्यूल ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं? H2 इधर PT PD और Ni ले लेते हैं. तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब हो जाता है. व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, H2 इज डायटोमिक स्पीशीज, उसमें से मोनो एटम H and H बन जाएगा और वो H निकल की सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब होगा एंड देन डबल बॉन्ड टूट जाएगा एंड यू गेट योर अल्केन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन. Let's start with the difference between physisorption and chemisorption. The first property, that is force of attraction. So here in case यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखे हैं दोस्तों, आप लोगों को फुल लाइन और फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है. That is in physisorption, weak van der Waals forces are involved, while in case of chemisorption, strong chemical bond are involved. Specificity, not specific in nature. Not specific in nature means कहने का इंटेंशन any gas adsorb on a surface of iron metal. While in case of chemical specificity का मतलब you cannot put any random A and B and you can convert C and D. Specific chemical से ही specific product बनेगा. Let's take example के N2 plus 3 mole of H2 you get 2 mole of ammonia. मैं नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन डाल के प्रिपेयर करना चाहूँ अमोनिया तो नहीं फिजिबल है. मीन्स इन ईच एंड एवरी केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्ड दे आर रियली वेरी स्पेसिफिक. रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब जस्ट बिकॉज दे आर अटैच विथ वीक van der Waals force, so they can remove the surface very easily or adsorb any another place also. While in case this is chemical bond, it is really very difficult to break down the bond. You require very high amount of enthalpy or energy
to break down this such kind of bond. So that's why it is irreversible. Once bond make, it is difficult to break down. Now, extent of adsorption and the nature of the gases. Easily liquefiable gas are easily adsorbed than the permanent gases. Easily liquefiable gas means low temperature preferable. मैंने पहले ही बताया था आपको, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना फिजिक्स ऑप्शन फिजिबल है. Gas which can react with its adsorbent shows chemisorption. Heat of adsorption, energy of activation is really very low, that is 20 to 40 kilojoule, and opposite to that really very high, that is 80 to 240 kilojoule per mole. Temperature, once again low temperature is favorable. It decrease with the increase in temperature. Adsorption decrease होता जाएगा अगर temperature बढ़ता गया तो. Next, chemisorption के अंदर high temperature is favorable because each and every chemical reaction takes place at the optimum temperature and pressure. It is increase with increase the temperature. Just because हमने chemical kinetics अभी खत्म किया, if temperature increases, rate of forward reactions takes place or rate of forward reaction is easily takes place. So कहने का intention, if temperature increases, chemical kinetics की वजह से भी हम देखने जाए तो rate of reaction is also increases. Activation energy, no appreciable activation energy. Why? Once again, all the physical forces are there. There is no chemical force. तो reactant to product convert करने के लिए जो energy of activation चाहिए वो physical force में नहीं चाहिए. High activation energy is required. Last, nature of layer. Multi-layer in case of physics option. एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा easily accommodate हो सकते हैं. But only unimolecule means कहने का intention, if carbon can accommodate 4 bond तो carbon 4 ही bond बनाएगा. 5, 6, 7, 8 is not feasible in case of chemistry. Chemical substitution के अंदर वो feasible नहीं है. But physics option है तो physical adsorption के अंदर multi-layer can easily formed. तो in short multi-layer is formed over here. Here in case no multi-layer is formed. So most important 2 marker, 3 marker question give the difference between chemisorption and physics option. If possible, write down all the 8. अगर 8 याद नहीं आ रहे तो मिनिमम 6 लिखने पड़ेंगे कंपलसरी, अदरवाइज यू लॉस्ट योर मार्क. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. ये सेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा, दैट इज केमिसॉप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन. थैंक यू.